प्रकाश जी की जो पहली फिल्में आपने देखी भी होंगी, वो सब मुश्किल फिल्में होती है। मुश्किल से कहने का मतलब दे आर वेरी इंटेंस, दे आर नॉट हैप्पी गो लकी फिल्म। उसमें म्यूजिक का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं रहता, डांस वांस का भी, ग्लैमर का ज्यादा स्कोप नहीं है। तो जब आपने ये फिल्म स्वीकार की, एक्सेप्ट की, तो आपको कुछ डर लगा? बिकॉज दे वर नॉट एक्चुअली योर टाइप ऑफ मूवीज. Definitely, every time you try something new, it's always a little bit scary. It's always a little daunting, and I think those challenges when you take, those are the most exciting ones. If I am going to do exactly the same thing in every movie and say, okay, I must have 5 songs and I must have, the kind of glamorous numbers and they must be urban-based movies, then I think you're going to eventually bore yourself and probably the audience eventually. I think. प्रकाश जी, जब कैटरीना आपको मिली, दैट टाइम ये कोशिश कर रही होंगी फिल्म इंडस्ट्री में आने की। इतनी बड़ी स्टार नहीं होगी जितनी बड़ी स्टार ये आज तो बहुत बड़ी स्टार है। इनके बारे में जो फिल्म इंडस्ट्री में जो हो सकता है गॉसिप ही हो, लेकिन ये कि अभी कैटरीना को साइन करना आसान नहीं है। कैटरीना को साइन करना बहुत बड़ी बात है। कैटरीना मिलेगी भी नहीं। छोटे मोटे प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बोलते अरे कैटरीना मिलेगी नहीं आपको, 2 साल तो मिलने में लगा देगी। तो आपको लगा कि जब आप जिस कैटरीना को मिले थे और अब जो कैटरीना द स्टार, उसमें कुछ फर्क था? और मुझे तो आज तक नहीं लगा कभी भी इन टर्म्स ऑफ हर काउंटेनेंस और इन टर्म्स ऑफ हर रिस्पॉन्स, शी इज स्टिल द सेम, शी इज स्टिल simple, and I don't think there is anybody in the industry who will say that Katrina will not respond to a call or somebody would approach. I'm absolutely positive that anyone who is a filmmaker who would have a subject, if he approaches her, I mean that's the kind of, I know of some people who would make it very difficult to approach, but I don't think Katrina will ever do that. I can't see Katrina doing that. But actually I have to even though it's not in my defense, if I don't know the filmmaker and I don't know the person, then sometimes if I have no relation with the person at all, then I will not respond to the call, because I think you do have to protect yourself a little bit. You cannot be. But there are ways and means to approach you. Yeah. I mean, if you become that sort of star that Katrina is, you don't approach her directly. I mean, you approach her, through a secretary. So there are people who look after her work, or there are people who would, screen it before the and initially or even now, I can pick up my phone and call her. But most of the times when there are things which my people do or I have to do, I wouldn't bother her. I would call her secretary or people who look after work, because that's the way it is. I mean, I wouldn't want to be disturbed all the time by everybody. So that's how it works. एक सीधा सवाल आपसे ये है कि मैं आज भी अगर जब आ रहा था आपको मिलने के लिए तो मैं न्यूज़पेपर देख रहा था, अखबार पढ़ रहा था। आज भी अखबार में लिखा हुआ था कि जो राजनीति फिल्म है वो कांग्रेस की कहानी है, वो सोनिया गांधी की कहानी है। कहीं ना कहीं गांधी फैमिली से उसमें कुछ कैरेक्टर्स, कुछ शेड्स मिलते जुलते हैं। कांग्रेस ने एक डेलीगेशन बनाया जिसने इस फिल्म को देखा। मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, आप बताइए, बिकॉज आपके पास सबसे सही वर्जन होगा। नहीं ना, मैं तो हमेशा से कहता रहा हूं, और अभी तो सांच को आज के अभी अगले 6 दिन के बाद फिल्म रिलीज हो जाने वाली है। देखिए, ऐसा है कि घटनाएं, पात्र, चरित्र, मैनरिज्म्स, इन सारी चीजों को अगर आप जोड़ के देखना चाहें तो मैं आपके चरित्र और पात्र और मैनरिज्म्स को आप जिससे कहें उससे मैं जोड़ के आपको बता देता हूं। ये किसी अच्छे से ही जोड़िए। एक मेंटल मेकअप है। हाँ। नहीं, अच्छे और बुरे का तो कोई फर्क नहीं है ना। तो नजरिया वाली बात है, ग्लास में आधा पानी है कि आधी खादा खाली है। बट कहीं गांधी परिवार आपके दिमाग में था? बिल्कुल नहीं था, क्योंकि देखिए गांधी परिवार या सोनिया गांधी जी की का जीवन जो है इतना इंस्पायरिंग है। उनका व्यक्तित्व देखिए, उनका संघर्ष देखिए, उनकी कहानी देखिए। कि हमारे इस पूरी फिल्म के अंदर में 7 बड़े बड़े चरित्रों के बीच में कतरीना एक चरित्र है। अगर गांधी परिवार पे आधारित फिल्म होती तो कतरीना की कहानी होती है पूरी। ये कहानी सब 7 चरित्रों की है। मनोज बाजपेयी या अर्जुन रामपाल या रणबीर हो या अजय देवगन हो या नाना पाटेकर हो, ये सभी महत्वपूर्ण पात्र हैं। ये सब महाभारत से इंस्पायर्ड पात्र हैं। इसका चरित्र कहीं न कहीं महाभारत के द्रौपदी से इंस्पायर्ड है।
आपने महाभारत देखी है, पढ़ी है? I've seen nowadays you have so many adaptations on TV. But you saw it. Yeah. No. She didn't have to see Mahabharata to Not for this understand. film. Not for You this don't need film. to, that wasn't part of my homework. That was incidental. That was incidental. I mean, that was my homework. The shades of Draupadi. The Draupadi is a victim of circumstances, of the behavior of her husband, of the situation that she gets drawn into in Mahabharata. Right from her birth to her adulthood, to her marriage, to her, being banished into the jungle, to being humiliated by, in the Sabha. She is a victim. And so is Katrina. Katrina's character in my film. She is a victim. She gets manipulated. And then she eventually takes the mantle. She is forced to do that. Katrina, you are a metro person. दिल्ली में, मुंबई में आप शूटिंग करती हैं, ठीक है, सब कुछ ऐसा ही है जैसा कि आप जानती हैं. भोपाल में जब आप इतने दिन रहीं और प्रकाश जी आपको भोपाल जैसे शहर में ले गए, जो कि छोटा शहर है, लोगों की सोच भी थोड़ी अलग होती है. वर यू मॉब्ड इन भोपाल? लोगों का रिएक्शन आपको देखकर क्या था? लोगों ने क्या किया? लोगों ने कुछ ऐसे, इतनी सुंदर लड़की हमने कभी देखी नहीं. I'll let her speak, yeah. It's very difficult to judge that because every time I would go out in public, it was to attend the shooting. And when we would attend the shooting, there was a very unusually organized, peaceful, and coordinated atmosphere. We were most of the time shooting in public outdoors with about 5,000 people around here or there. Everyone would react at the right time. They would move at the right time. If I had to do one shot where I'm walking across the road basically, and we have to shut down the whole kind of town center of Bhopal, and there's must be at least 3,000-4,000 people around me. So as I come forward and I'm kind of just waving at the crowd, the whole kind of city is kind of moving along with me, and we did the shot maybe 7 or 8 times. So action, and then for all those 3,000 people to come back to their place and do it again. I mean, it would just happen as if it was just me and you in the shot. It was I still till today don't quite understand how Prakash Jha managed this kind of organization and peaceful shooting. No, a lot of times even the crowd can get excited and they'll do, whistling and making to attract your attention. Nothing of the sort. If one person also did something, Prakash Jha would just say something on the mic and silence. And there was also a scene we had done where my character goes to hug Ranveer's character, and the whole street of this side of the camera had lined up with a crowd of people. And I remember thinking in my head, when they see actors go and hug somebody, they all start teasing and things. I remember thinking in the shot that this was going to be very awkward. But the whole crowd was so, a little bit happened, disturbance. So Kashi got on the mic, and he said, he has a way of talking to people that people listen. He said something to them like, this is a film, and these are children, they're trying to work, and you can't distract them. After that, nobody made a peep. So I think that has a lot to do with Prakash's influence in the area, maybe. I don't know how to say it. हिंदी में डांटते होंगे उनको. I know, but there's a way. See, lots of people grab the mic and start screaming on the set. They be quiet and silence on the set, and everybody's still going, no? There's another way when you say something and then everyone is quiet. Raji, see, Bhopal is a lovely place. Such beautiful, इतने तहजीब वाले लोग हैं वहाँ पे. आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ऊपर से लेके ब्यूरोक्रेट से लेकर के और आम आदमी जो सड़क पे गली पे उनको सबको मालूम था, क्योंकि हम 1 साल से वहाँ प्री प्रोडक्शन कर रहे थे कि शूटिंग होने वाली है और स्वागत करना है इनका. और हमारे फिल्म के अंदर में रैलीज और मीटिंग्स, उनके लिए करीब 7-8 हजार लोगों का क्राउड हमने ट्रेन किया था, जो पूरे मध्य प्रदेश के शहर से हमने 9 महीने तक वर्कशॉप्स करके उनको ट्रेन किया था. तो वो हमारा जो इमीडिएट घेरा होता था वो उन लोगों का होता था. तो जब भी अभी कतरीना ने फिल्म में एक भाषण दिया जो प्रोमो में भी आता है, उस भाषण में करीब 15-20 हजार लोग जमा हो गए थे.